गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आज हमारा फिर से जो टॉपिक है वो हम लेते हैं वर्क। इफ़ यू आर एम्प्लॉयड गेटिंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर अ जॉब और स्टिल ट्राइंग टू डिसाइड what kind of career you are interested in. You will need to be able to tell the examiner about this if you are asked questions about work. So I am going to read some IELTS style questions and answers below, and pay attention to the phrases in bold. So at the end I will give you some phrases also on which we will discuss what is the meaning of these phrases and how can we use these phrases in our day-to-day life. So first of all, I will ask the question and reply the question from part 1, and that is style question. So the question is, what do you do? You have to reply like this way: I do a job share with a friend in a boutique. I enjoy it. I like working with customers. Unfortunately, it's only temporary work, but one of the perks of the job is I get a discount on the clothes. The second question: do you have any career plans yet? Yes, I would like to be my own boss. One day, I am interested in programming and I would like to create apps for myself or for other companies. I know being self-employed would be a challenge, but the idea of doing 9 to 5 job doesn't appeal to me at all. What do you see yourself doing in 10 years' time? I would hope to be working not a high powered job, but I am quite a creative person, so something where I can work with my hands would be nice. As long as I am not stuck behind a desk doing something boring in a dead end job, I'll be happy. So this is the answer, and now the part number 2, style task. So इस style task में आपको पूछेंगे describe your ideal job, and you should say, and you can reply in 3 ways. The first one is what job is, and the second one is whether you would need any qualification, whether it would be easy to find work, and say why you would enjoy this job in particular. So likewise you will reply, I have always loved watching wildlife programs on TV and often thought how much I would enjoy working with animals. Perhaps in a safari park, something like that. You would probably need a degree to have any chance of being called for an interview. And whether there are many full-time jobs, I don't know. I'm sure a lot of perks really on voluntary work, so it might not be easy, and it probably wouldn't be well paid either, but money isn't everything. I would get so much job satisfaction. I can't imagine it being the kind of job where you get stuck in a rut. And I think I'd be good at it as well. I had loved to work with animals. I enjoy manual work and I am a good team player. So even though the working conditions might not be the best, I think that would be my ideal job. So this is how you can reply the second type of the question and the task. Now the third part, style questions. Examiner will ask you if there are limited number of jobs available, who should be given priority, young people or older people with more experience. Things are so different these days. A few years ago, older employees would often take early retirement or go on to part-time contracts, and there were always opportunities for younger people, but now jobs are so scarce. I think younger people need to be given the chance whenever possible. Examiner again asks the questions, what are some of the important things a candidate should find out before accepting a job? Well, you would need to know about your area of responsibility and your salary, of course, and then there are things like holiday entitlement, maternity or paternity leave, if you are thinking of having children, and what the situation is regarding sick leave, that kind of thing. What are the advantages of having your own business rather than working for someone else? Well, unfortunately, being an employee at the moment is very stressful. People have very
heavy workloads. They are always under pressure to meet deadlines. Running your own business isn't easy, but I do think it would be far more satisfying. So this is how you can reply almost all the questions, and you can answer likewise. You will score good bands. So keep watching. Now the time to define the words. These are hard. So let me ask some questions and give you the words. To be called for an interview. To be your own boss. A date and job. To do a job share. A good team player. Full time. A heavy workload. A high powered job. Holiday entitlement. Job satisfaction. Manual work. Maternity leave. To meet a deadline. A 9-to-5 job. One of the perk of the job. Part time. To run your own business. Sick leave. To be stuck behind a desk. To be stuck in a rut. To take early retirement. Temporary work. Voluntary work. To be well paid. Working conditions. To work with your hands. So these are the words. Now try to find it out what are the meanings of these. So let's discover the meanings of these words. So first word is to be called for an interview, means to be invited to attend an interview. आपको जब भी इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए, then we use this phrase to be called for an interview. To be your own boss means to have your own business. If you are working for yourself, then you are your own boss. A dead end job. A job with no promotional opportunities. So dead end job में क्या होता है कि आपको प्रमोशन के लिए कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ नहीं होती. So बहुत सारे जॉब्स होते हैं वो डेड एंड जॉब होते हैं. To do a job share. इसका मतलब है to share the weekly hours of work with another person. यदि आप किसी आदमी के साथ अपना थोड़ा सा टाइम शेयर करते हैं तो वो आपका होगा to do a job share. Next one is a good team player. Somebody who can work well with other people, that is called a team player. Full time. The number of hours that people usually work in a complete week. तो आपका जितना टाइम होता है एक वीक में, जितना टाइम आप जॉब को वर्क को देना चाहते हैं वो सारा का सारा देते हैं तो वो कहलाता है फुल टाइम जॉब. A heavy workload. To have a lot of work to do. That is called a heavy workload. A high powered job. An important और पावरफुल जॉब. इम्पोर्टेंट भी होता है और पावरफुल भी होता है, उसको हम बोलेंगे हाई पावर्ड जॉब. हॉलीडे एंटाइटलमेंट. द नंबर ऑफ डेज हॉलीडे अलाउड, कि आपको जॉब के दौरान कितने हॉलीडे अलाउड है उसी को हम बोलेंगे हॉलीडे एंटाइटलमेंट. जॉब सेटिस्फिकेशन. द फीलिंग ऑफ एन्जॉइंग अ जॉब, दैट इज़ कॉल्ड जॉब सेटिस्फिकेशन. मैनुअल वर्क. वर्क दैट रिक्वायर्स फिजिकल एक्टिविटी इज़ कॉल्ड मैनुअल वर्क. जिस काम में आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं वही क्या कहलाएगा, मैनुअल वर्क. मैटरनिटी लीव. टाइम ऑफ वर्क गिवन टू अ वुमेन अबाउट टू हैव अ बेबी. जब औरतें गर्भवती होती है या उनके बेबी होने वाला होता है उस समय जब उनको लीव दी जाती है उनको हम मैटरनिटी लीव्स कहते हैं. टू मीट अ डेडलाइन. टू फिनिश अ जॉब बाय एन एग्रीड टाइम. सो डेडलाइन को मीट करने का मतलब जितना समय आपके पास दिया गया है कि आपको सोमवार तक या टिल मंडे आपको फिनिश वर्क करना है तो आपकी वो डेडलाइन कहलाएगी. अ 9-to-5 जॉब. अ नॉर्मल जॉब दैट कंसिस्ट ऑफ एन 8 hours डे. ऐसा जॉब जो दिन में 8 घंटे आपसे लेता है उसी को हम बोलते हैं अ 9-to-5 जॉब. वन ऑफ द पर्क्स ऑफ द जॉब. An extra benefit you get from a job, that is called a perk of the job. Part time. Working less than full time. आप फुल टाइम नहीं दे रहे हो, उसके कुछ पार्ट को काम में ले रहे हो, that is called part time job. To run your own business means C. To be your own boss. It is the same to be your own boss or to run your own job. To be self-employed. C. To be your own boss. The same thing is to be self-employed. Sick leave. Time allowed of work when sick. तो आप जब बीमार होते हो और आपको टाइम मिलता है उसी को हम बोलते हैं sick leave. To be stuck behind a desk. To be unhappy in an office job.
आप यदि ऑफिस का काम करते हैं और उससे अनहैप्पी होते हैं तो वो क्या कहलाता है? टू बी स्टक बिहाइंड अ डेस्क, टू बी और टू गेट स्टक इन अ रट, टू बी इन अ बोरिंग जॉब दैट इज़ हार्ड टू लीव। ऐसा जॉब जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाए बट बोरिंग हो, उसी को हम बोलते हैं टू गेट स्टक इन अ रट। टू टेक अर्ली रिटायरमेंट, टू रिटायर अर्ली, रिटायर मीन्स टू रीच एन एज व्हेन यू आर अलाउड टू स्टॉप वर्किंग फॉर अ लिविंग। अब आपको आजीविका के लिए काम नहीं करना है तो उसी समय को हम बोलते हैं रिटायरमेंट। टेम्पररी वर्क, वर्क डन फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली। वॉलंटरी वर्क, टू वर्क विदाउट पे, यदि आप बिना किसी पेमेंट के काम करते हैं सो वो कहलाएगा वॉलंटरी वर्क। और आप टेम्पररी काम करते हैं सो वर्क डन फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली, किसी टाइम के लिए, एक निश्चित समय के लिए आपको काम दे दिया गया, वो क्या कहलाएगा? टेम्पररी वर्क। टू बी वेल पेड, टू अर्न अ गुड सैलरी, आप अच्छी सैलरी ले रहे हैं, इट मीन्स टू बी वेल पेड। वर्किंग कंडीशंस, द आवर्स, सैलरी एंड अदर एंटाइटलमेंट्स दैट कम्स विद द जॉब। तो आप किन किन कंडीशन में कितने समय के लिए किस सैलरी पे काम करते हैं, उसी को हम बोलते हैं वर्किंग कंडीशंस। और हर वर्किंग एम्प्लॉय के पास कंडीशंस होती है। टू वर्क विद योर हैंड्स मीन्स टू डू मैनुअल वर्क, यदि आप मैनुअली कोई काम करते हैं तो उसी को हम बोलेंगे टू वर्क विद योर हैंड्स। सो ये थे कुछ बोल्ड लेटर वर्ड्स जो हमने यूज़ किए थे एग्जामिनर के क्वेश्चंस के आंसर देते समय। तो आप फिर से वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए एंड इस तरीके से आंसर्स देना सीखिए। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं ड्रीम टच।